Okay, so it's day 51 and today we'll be solving this number of beautiful partitions. So इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि you are given a string s, it's basically digit string, and you have to partition into k non-intersecting substrings and such that हर substring का length should be at least equal to min length, and जो भी तुमने substring divide किया it will start with a prime digit and end with a non-prime digit, and just return the number of beautiful partitions modulo 189 plus 7. So if you even look at the example, जैसे ये एक string है, so you can go from 2 to 4 because 2 is prime, 4 is a non-prime. Similarly 2 to 8, 5 to 1, blah blah जो भी है. So obvious दो तीन चीज़ें which are very obvious that you don't have an answer if your last string is a prime number, because then you cannot end the substring with a prime number, and even if your first number is a non-prime number, you again cannot start your substring itself. So वो दो conditions है जहाँ पे you'll have to just check and return a 0. ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट लेट्स चेक द ब्रूट फोर्स कि कैसे ब्रूट फोर्स कैसे रन होता है इसमें, लाइक बेसिकली रिकर्जन वाला पार्ट कैसे रन होगा. सो जस्ट अज्यूम करो कि वी आर एट करेंट पॉइंटर एंड देर आर के पार्टीशंस लेफ्ट टिल नाउ, एंड ये मिनिमम लेंथ वाला पार्ट है, दिस इज एस, एंड ये मैंने प्राइम्स का एक सेट बनाया सो दैट आई कैन ईजिली काउंट एंड चेक विच ऑल नंबर्स आर प्राइम एंड नॉट. एंड इनिशियली मैंने 2 3 5 7 उस प्राइम में इंसर्ट कर दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो चेक्ड इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ वही जो मैंने बेस केस बताया, इफ इट्स अ नॉन प्राइम नंबर एंड अगर लास्ट वाला प्राइम है तो सिंपली द आंसर इज़ 0. ठीक है, नाउ यू आर एट करंट एंड यू हैव के पार्टीशंस लेफ्ट, सो फ्रॉम दिस करंट व्हाट ऑल पोजीशंस यू कैन गो. First things first, if that current, like your aim is to start your substring from that particular current, if your starting point is current and your starting point जो current पे जो like what you are aiming to start from is a non-prime number, you'll simply return a 0. That means there is no way you can start a substring from that particular current. Now हमें दो तीन चीज़ें चेक करनी है. what all positions you can jump into. First things first, मैंने यहाँ पे जो ये चीज़ डाल दिया min like this you can also take यहाँ पे. Basically this is a failed code, ये like इस code ने TLE दिया था, that's why I'm explaining why I got the TLE and how you can improve that. But brute force उसके लिए थोड़ा important है समझना. So what all positions you can end that substring. ठीक है, तुमने decide कर लिया तुम CUR like current से start कर रहे हो, and till what all positions you can go. तो first things first, you'll try to end at current plus 1, but j minus current plus 1 should be greater than equal to min length. So this is wrong, you can also take this यहाँ पे, but anyway ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो ये कंडीशन है फर्स्ट, एंड सेकेंड कंडीशन इज़ तुमने जहाँ से एंड कर रहे हो दैट शुड बी अ नॉन प्राइम नंबर. सो लाइक यू आर ट्राइंग टू एंड एट j and j should be a non-prime number, then only you can end your substring over there. Once you have ended your substring वहाँ पे, what you can do is you will go till j plus 1 because तुम्हारा j पे end हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल ये, so I start from 2, I end it at 4. ठीक है, because 2 was a prime number, 4 मैंने चेक किया is a non-prime number, so 2 and 4 is my first substring. Then मेरा second जो recursion start होगा that would be from 5. So that's why j plus 1, जहाँ पे मेरा पहला वाला ख़त्म हुआ उससे एक आगे, एंड अभी मुझे एक कम पार्टीशन करना है, so that's one less partition, and similarly minimum length blah blah जो भी है आगे. ठीक है, so all this I'm saving in my dp current k, and then you can just memorize it and then you'll have your answer. But the issue with this is if you look at the time complexity of this particular code, it is like current is getting changed, k is getting changed, and to resolve every dp state we have to iterate approximately n. So this kind of becomes an n cube solution, and its time complexity would be also very high. It would cross 1.2 1.5 seconds very easily. So how to optimize this? So first let's try to convert this whole thing into tabulation. Now if you look at this particular code, this is the tabulation wala code. ठीक है, so in this particular code again it's exactly the same thing. I am currently at an index I. ठीक है, I am currently at an index I. What I am doing is I am trying to make these partitions, and again I am trying to go till a certain value. Okay, I am checking if I can go till like this part is basically a replication of this part. ठीक है, this is the tabulated version of this part. Now again I am doing the same checks, like it should be greater than equal to min length, and my prime should be a non-prime number जहाँ पे the substring is ending. एंड जैसे यहाँ पे हम एडिंग इनटू माय आंसर, यहाँ पे सेम चीज़ j plus 1 partitions minus 1 जो यहाँ पे स्टेट चेंजेस हो रहे थे, सेम थिंग इन टैबुलेशन इटसेल्फ. So this exactly is actually a replication of this memorization code, and again if you can see there are 3 for loops,
like बाहर एक for loop है, this is the first for loop, then the second for loop, and then the third for loop. So again, simply an n cube algorithm, which again won't pass. So how do you improve this? So to improve this, what you'll do is, जो ये वाला part है, if you closely observe, this part, ये वाला part can be taken as a suffix array. You can act like, if you can see, we are easily doing a bottom up approach. Now in this bottom up approach, you can simply take ये वाला जो part है into a suffix array. You don't have to run this for loop. You can avoid this particular for loop. And then and then what would you run? So once you have made this change, इतना part जब तुम for loop में like एक suffix array में convert कर दोगे, so basically take your dp only as a suffix dp, not just a standard dp. So this is the wrong code now. अगर तुम एक बार ये वाला change कर दोगे, so your code would become something like this: the first for loop, the second for loop, and then यहाँ पे we are dp I of partitions. If you see, this RHS is actually a suffix. dp of I plus min length partitions minus 1 is actually अब तक का उस partitions minus 1 के लिए पूरा suffix जो store हुआ है. ठीक है, so basically ये वाला part अभी के लिए black box कर लो. Now if you see, once I have saved my dp, what I'll do is I'll be running this. For that partition, I would be updating my dp. And how I'm updating my dp? First I get dp I plus 1 partitions, like अब तक का जो suffix था वहाँ तक का partition I'm like वहाँ तक का suffix I'm getting. Then I'm checking जो मैंने नया dp value calculate किया है, will that add to my answer? And how you'll check that? To check that, your current number should be like your current number should actually be a prime number जहाँ पे तुमने decide किया कि I'll start from, that should be a prime number. And उससे पहले वाला नंबर, जैसे अगर सपोज तुम लोग i इज इक्वल्स टू 5 में हो, i like i इक्वल्स टू 5 में, एंड दैट नंबर इज 7, and I equals to 4, and I equals to 4 is actually 2, then you cannot, this is not a valid case, right? You cannot start at 5 because the previous string ended at 2. So that's also not allowed. So the only way you will be adding that dp into your answer is your current number should be a prime number, एंड उससे पहले वाला नंबर जहाँ पे पहले वाला सबस्ट्रिंग एंड हुआ था, दैट शुड बी अ नॉन प्राइम नंबर. देन ओनली यू वुड ऐड दैट टू योर डीपी, सॉरी द सफिक्स अरे, एंड देन यू विल अपडेट योर करंट डीपी ऑल्सो जो तुमने रिसेंटली सेव किया टू द रिसेंट सफिक्स बेसिकली. एंड दैट्स हाउ दिस इज द पार्ट वेयर ये वाला ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्टोरिंग अ सफिक्स, एंड दिस फॉर लूप इज एक्चुअली नॉट नेस्टेड. सो मतलब ऑब्वियस है कि ये उतना टाइम नहीं खींचेगा. So yeah, like first try the brute force, understand how brute force works, convert that brute force into into a tabulation approach. तो मैं देखेगा कि how to optimize this part, and this part you can easily optimize by storing this, by making this a one-liner. And how you can make that a one-liner? By simply storing this particular thing, because the partitions minus 1 thing is already constant. The only thing changing is j plus 1. So you can easily create a suffix about like for this thing. एंड हमने वही किया है इस स्टेप में. पार्टीशंस वाले अरे में वी हैव मेड अ सफिक्स, एंड दैट ओनली वी आर एडिंग ओवर हियर, कीपिंग द पार्टीशंस माइनस 1 थिंग कांस्टेंट. सो दैट्स ऑल. ये मैंने ज़्यादा विजुअली नहीं बताया क्योंकि ब्रूट फोर्स से तुम इजीली समझ गया क्या हो रहा है, एंड देन यू कैन ईजीली देन रेप्लिकेट द होल स्टफ यहाँ पे लाइक टैबुलेशन में, एंड देन ऑप्टिमाइज द टैबुलेशन. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू सी दिस कोड ऑल्सो फेल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस, min length equals to 1. बट हाँ, दैट्स ऑल. ठीक है, कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना. बाय बाय.